Hello. Hello. Hello, Sam, sir. Salam. So unit number one is I have to start, and whatever the necessary things are there, that only we do it because we have very less time. So Okay, sir, starting just with the get yes, fast. yeah, inshallah, we hope the best. Starting with the P series test, which is called P test, preliminary test. It's a basic test, or we say that it is a helping test. What is that test? An infinite series, an infinite series. You may not get any question from this, but without this we cannot do it anything. Summation p varies from 1 to infinity, 1 by n to the power of p. Let us expand the summation. If I'm giving p value is 1, we are getting 1 by p to the power of p value is 1, 1 n power 1 plus. Tell me the next term, n to the power of 2 plus. Tell me the next term, 1 by n to the power of By 3. n to the power 3. It will be continuing, and we say such this type of series will be convergent. This type of all series will be convergent if your p value is greater than 1, and P such value. this type of series will be divergent. It will be divergent if your p value is less than or equal to 1. So let us see the series and the way it is convergent. Only two things we have to discuss. It is either convergent or divergent. We don't have any other concept here. Sir, So what does convergent, divergent mean? convergent means approaching to some value. Divergent means approaching to infinity. That's it. Okay. Okay. Convergent means approaching to some value, some finite value, and divergent means approaching to infinity directly. Okay. So this is next some examples we can see. What type of examples? Let me check. Test the convergence of this type of series. Summation 1 by n. It's a first example. So what to do? How to check it? This one simply we have to compare. You see, the summation varies from 1 to infinity. Always the summation will start from 1 to infinity. It will not start from 0. It will not start from negative values. And if I am not writing summation, variation, if I am not writing, you have to understand that it is 1 to infinity only. If I am comparing with n power p, let us see the comparison. The p value is 1. So therefore, we simply write by p test. Therefore, by p test, summation 1 by n convergent. Convergent, we are using the short form CONV. Okay. Then after immediately p series test, we have our important test that will start limit comparison, limit comparison test. I didn't get this last part. मतलब ये example किस चीज का है? Convergent or divergent? ये series है भाई 1 by n. If you expand the series, how the terms will come? 1 by 1 plus 1 by 2 1 by 2 plus plus 1 1 by by 2, 3 1 by 4. plus, and it is continuing. So we are going to check whether it is convergent or divergent. So this type of series will be p values less than or equal to 1 now. Yes, yes, you are correct. Less than or Yes. equal to 1, it is divergent. It is not convergent, it is divergent. Because less than or equal to 1 now, divergent. So if you see the series, it will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 and so on. So means what? Actually, the values are decreasing. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. So after one stage, it will now become 0. So it is divergent. Less than or equal to means divergent. Okay. One more example you want? Yes, sir. Summation 1 by
n raised to the power of 3 by 2. Let me check whether this type of series will be convergent or divergent. So in solution, what I'm doing here is simply this one I want to compare with 1 by n to the power of p, because it is of the form n power p. Now if you see, if you compare, what is our p value? Our p value is what? Come on, it's a 3 by 2. By 2. 3 by 2 is definitely greater than 1. So by p-test, summation 1 by n to the power of 3 by 2, what do you say? It is convergent. Okay, one more example you want? Summation Yes. 1 by n raised to the power of 1 by 2. Solution. 2 marks question you can expect like that. 1 by n to the power of p we compare. So then we conclude that our p value is 1 by Equals to 1 by 2. which is less than 1 1. by 2 is less than 1. It is divergent. P-test, by p-test, summation 1 by n raised to the power of 1 by 2 divergent. Hope it is clear for you. Yes, sir. Now, next moving to our important test, that is called first test in this concept, that is called limit comparison. Comparison test. This is a foundation of this unit. Limit comparison test. Okay, Statement sir. also will ask in exam. Sometimes they may ask the statement only. So what is the statement? Statement. Any test statement also you may ask in exam. So last time Okay, ratio sir. test statement is asking. Last question paper. So what is that? Which test? Ratio test. Okay. Let summation un after Last this will be. backlog one, or sir, the regular one. Yes. Last time the backlog one or the regular Backlog, one? backlog, backlog, backlog. Let Okay. summation un is a series of positive terms. Let summation un is a series of positive terms such that limit n tends to infinity un by vn is equal to finite value. Means when we are finding limit un and vn value, that should not be 0. It should be some answer we exist. Should not be infinity. That's it. Then And what is VN here, sir? yeah, I'll tell you. Summation un and summation vn behave same. That is, if summation vn convergent, which implies that summation un also convergent. ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है, आगे चल के दूसरे टेस्टों में काम आए. Also convergent. Okay. Behavior is same means what do you mean? If convergence means together they'll do. If divergence means again together. If summation vn divergent, which implies that summation un also divergent. Okay, this is just a statement. Now, how to solve the problem if it is related to limit comparison test, and most important thing, how to identify that also I'll tell you. Next step we see So how statement is something, how many marks? 2 marks. 2 Okay. marks. Working rule. This is only for your understanding. Exam में working rule नहीं पूछेगा. Working rule. Okay, sir. हर एक को वर्किंग रूल नहीं दूंगा मैं आपको. ये पहला है ना, थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करके फिर अपन आगे चल के अच्छे से कर सकते हैं. इसीलिए
स्टेप नंबर 1 में आप क्या Okay. करना है, फाइंड un. un means, what do you mean by un? The nth term, the nth term, the nth term, and condition is if not given. कभी कभी क्वेश्चन में आपको nth टर्म नहीं रहेगा तो आपको un फाइंड आउट करना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ही रहेगा un, तो नो नीड टू फाइंड. Nth सेकंड term स्टेप, means for the nth last term, term. yeah, yes, now it's not the last term, it is the general term. Like this example, here un value is this one, this is, or un value is 1 by n to the power of 3 by 2. Summation value itself is a un value. Okay, means the nth term. un means what? The nth term. वो सीरीज का Okay. जनरल टर्म, nth टर्म, ऐसा टर्म जिससे आप पूरी सीरीज बना सकते हैं. अंडरस्टैंड? Yes. नाउ जो अभी आप क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज वीएन, लेट नहीं बोलेंगे, चूज बोलेंगे. चूज ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज वीएन. कैसा चूज करना, देखिए वीएन क्या है और कैसा चूज करना. हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ एन. So what does auxiliary series आई mean? टेल यू, जस्ट वेट, लेट मी Okay. फिनिश. हाईएस्ट पावर ऑफ एन फ्रॉम न्यूमरेटर, पहले तो उसको खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलूंगा ना मैं. जी. Highest power of n from denominator. This is the second step you have to apply. Third step is limit n tends to infinity. जब भी आप un और vn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, your answer should not be zero and the two finite answer, infinite answer accepted नहीं है. Now next fourth step is by limit comparison test, summation un and summation vn behave same, behave same. इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बोल, अब देखेंगे ये कैसा करते हैं. कोई क्वेश्चन है जिसमें nth टर्म नहीं है तो आपको वो nth टर्म un पहले बनाना पड़ेगा. अब उसकी और एक अच्छे से एग्जांपल अगर मैं आपको दिया तो, यहाँ पर अपने पास शेप्स है. यस, यस, लुक एट दैट. ये जो मैं सर्कल बनाया, सपोज यूर un इज दिस वन. ओके, अब और एक चीज मैं Okay. इसमें और एक सर्कल बना रहा हूँ अंदर. ये आपका vn, ये होल पार्ट इज un, this sum of the part is vn. Okay, now you see the convergency of or divergency of this un depending upon this vn. आप देखो खाना पकाने की एग्जांपल ले लो. आप खाना पकाते हैं ना, उसको खाना पक गया बोल के आपको कैसा मालूम होगा? तो खाने में से आप दो तीन दाने निकाल के चेक करेंगे, अगर वो पक गया मतलब आपको पूरा खाना पक गया, राइट? जी. अगर वो दो तीन दाने आपके नहीं पके तो आप ये समझते कि खाना अभी नहीं पका. तो अपना वीएन वही से क्या कर रहे हैं, वो यूएन में से एक पार्ट को चूज कर रहे हैं, एक पार्ट को चूज करके उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. अगर वो वीएन कन्वर्जेंट हो गया तो आपकी सीरीज पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई. अगर वो वीएन डाइवर्जेंट हुआ, पूरी सीरीज डाइवर्जेंट. अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर Yes. करना है. अब वो वीएन के लिए फॉर्मूला भी आपको बता दिया. अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे कि पूरी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है ना? Okay, sir. एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. आसान क्वेश्चन लेके करना पहले, उसके बाद थोड़ा टफ में जाएगा. देखो नेक्स्ट पेज. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस वन. यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ summation 1 by
n into 2n plus 1. ये आपका एक क्वेश्चन है. Now we are going to check whether it is convergent or divergent. अब जरा अच्छे से आप इसको देख लीजिए कैसा कर रहा हूं मैं इसको, आप देखो. जी. Summation value means, what do you mean by summation value? Itself is a un value. मतलब अपने क्वेश्चन में un आपको दिया हुआ है, un value is equal to 1 by n into 2n plus 1. 2n plus 1. Can also be written as 1 by 2n square plus n. Can we write like this? Yes, yes or no? Yes, sir. Yes. After that, आपके पास अब un तो आ गया है. What do you want? Second step में क्या चाहिए अपने को? Come on, please tell me now. Choose an auxiliary Auxiliary. series Vn चाहिए. अब आप देखेंगे पिछले वर्किंग रूल में जाके वो कैसा बन रहा है. Highest power of n from numerator, highest power of n from denominator. अच्छा, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अपन सिर्फ और सिर्फ ओनली यूज्ड फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन. ये बात मैं आपको थोड़े दिन के बाद पूछूंगा, आपको याद रहता नहीं. देखिए, ओनली फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fraction. Okay, sir. After a few days I will ask you again the same question. Okay. Okay, sir. So now moving to Vn value. What is highest Okay. power of n from numerator? We don't have, so 1 only. We are not जी. getting any value of n in numerator. जी. Denominator में से n का highest power n क्या है तो square. लिया. क्या है? N square. That's it. That's it. 70% Sir, of so the work is done. from numerator, if there would have been an n, so we would taken that n only, right? n power 0 है यहाँ पर. Okay. अगर n power 1 रहता तो sir n लेते थे ना, n by Yes, n yes, square. yes, 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 yes. That will be for the next problem maybe. Okay. Done. Yes, sir. Moving to the third step. Limit n tends to infinity un by vn. Understand? Chalo, Yes, बोलिए. sir. Limit is equals to limit 1 by infinity 1 by 2n square 1 plus by, n by yes, 1 by 2n n square. square plus n divided by 1 by n square. N Perfect. square. Next, that is equals to We can limit also write it as n square by 2n square plus n. 2n square plus n, and the second fraction will become reverse, as you know, n square by Yes. 1. Correct? This is equal. Yes. I have lots of problem in this limits of comparison test. बहुत क्वेश्चन है मेरे पास. आपको प्रैक्टिस के लिए जी. सफिशिएंट हो जाता बहुत. See, can we take n square common from denominator? Yes, sir. What's left? 2n plus 1. 2 plus, come on. Okay. 2 plus 1 by By n. n. Yes, of course. Multiplied by n square by 1. Correct? Okay. This n Yes, sir. square and this n square cancel. और एक सही सिंपल वर्ड में बोले तो जब भी आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, मेक श्योर दैट देयर इज नो n टर्म हियर. यहाँ पर कोई n टर्म नहीं Okay. रहना. Sir, 1 by n can रह you सकता. write that? Can you write that? वो फिर नोट्स में रह जाता. n tends to infinity means definitely front side should be 1 by n or 1 by n square, that is become 0. n tends to infinity means n वाला टर्म उसमें नहीं रहना. 1 by n tends to 0. So al मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, apply limit. If you apply limit, what answer we are getting? Tell me. Limit n tends to infinity un by vn is equals to, what is the answer? Tell me. 2 As we apply the 1 limit, by. this 1 by n becomes 0 na. Yes. What's 1 left by off? infinity. So 1 by 2 only left off. Yes. Is it okay? Yeah. Which is not 0. And that Which too is is not. a finite value. Yes. That's it.
90% of the work is done. That's only we have to write the statement and finish by Yep. Okay, I comparison. got it. Limit comparison test summation un and summation vn behave same. Behave same. This is only the statement now. Yes, Yes, sir. but Yes. what is summation vn? Because the convergency of un is depend upon vn. So what is vn value Yes. actually? 1 by n square. It is finite. Directly It I want to is. compare with n power p. P test से compare कर लेता हूँ. So p value is 2 means greater than 1. मतलब what do you mean by p test? By p test summation vn summation Divergent. convergent. Okay. This implies summation un also convergent. तो ये तो फर्स्ट स्टेप पे ही कह दे सकते थे, राइट? देन व्हाट वाज द Very यूज good. ऑफ? Yes, very good. Last 4 years back एक स्टूडेंट को यही डाउट आया था, उनका नाम और रोल नंबर 2 भी याद है मेरे को. उसका आंसर भी देता हूँ आपको अभी. लेट अस फिनिश माय क्वेश्चन फर्स्ट. Summation 1 by n into 2n plus 1 is convergent. चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, उसका आंसर भी दे रहा हूं मैं. आप क्या बोल रहे हैं? यहीं पे वीएन डिसाइड करके यहीं खत्म कर देंगे. ये टेस्ट का नाम क्या बोले आप? व्हाट डू यू से द नेम ऑफ दिस? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में लिमिट अप्लाई बगैर ही आंसर देते आप. ओके. अंडरस्टैंड और सो नॉट? इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू अप्लाई लिमिट, बट वी कैन से, मतलब उससे पता लग सकता आंसर, पता राइट? लग सकता है, आपको मालूम हो सकता है कि आपका आंसर सही है या गलत. एंड ये ओके. थर्ड स्टेप कंपलसरी रिक्वायर्ड. The value of ओके. limit n tends to infinity un by vn should be finite. Then only this test is eligible and we can decide the nature of this series. ओके Understand? सर. First step यस. itself only we can understand that where it is going. But finally we have to apply the procedure and final result we have to give. I hope it's ओके. clear for you. Yes. Sir, can you show me where the limit, after applying the limit, the answer is into infinite? Infinite case will not be arises in these type of series. Limit comparison test में नहीं होता. ओके सर. इसमें नहीं होता. ये एक सिंपल टेस्ट है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे. आप सेकंड क्वेश्चन ओके. है. इन केस अगर वो आ गया वैसा, तो फिर क्या करना सर? नहीं होता ऐसा. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इंफिनिटी का केस अराइज नहीं होता. आप गलत कर रहे हो. ठीक है. आप गलत कर रहे हो. कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ मैं ये बात. आपसे ओके सर. मिस्टेक हो रही हो. एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ. वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, दैट इज समेशन n to the power of 3. मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में जा रहा हूँ. माइनस, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. सीक्वेंस सीरीज में कुछ भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है. ये यूनिट आपकी पॉकेट में रहना चाहिए. n power ओके 5. सर. सर बट यहाँ पे जब वो क्वेश्चंस दे देता तो फिर कौन सा टेस्ट यूज करना, उसमें बहुत वो हो जाता, राइट? बाद में आपको बोलूंगा. इसका आंसर मैं दूंगा. इसका आंसर अगर मैं नहीं दे सका तो फिर आपको ये ट्यूशन लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा. ओके. I will justify your answer or question. Your question I will justify. See, all the problems whatever doing we are doing now, it is all are related to the proper fraction only. सबके सब प्रॉपर फ्रैक्शन है. पहला एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ. अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. देखिए आप, ये न्यूमिनेटर की वैल्यू जी. n की कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है. Such a fraction is called proper fraction. For proper fraction, only limit comparison test is applicable. Okay? ओके अगर सर. मान लो इसके अंदर कहीं x या फैक्टोरियल आया तो फिर ओनली रेशो टेस्ट. ये बात आपको कोई नहीं बोले. वो रेशो टेस्ट. रेशियो टेस्ट. ओके. x इन्वॉल्व हो गया तो रेशो टेस्ट. ठीक है? पहले अपन आज इसको कॉन्फिडेंटली इसको खत्म करेंगे, फिर अपन रेशो टेस्ट की बात करेंगे. राइट? ओके सर. Summation value itself is a un value, n power 3 minus 5n square plus 7 divided by
n to the power of 5 plus 4n power 4 minus n. ये आपका un आ गया ना. So let us choose the auxiliary series Vn value. Can you tell me what is Vn? Highest power of n numerator is n power 3. Highest power of n denominator is n power 5. And 5. After simplifying, we get our answer is 1 by n square. Please don't write simply it is convergent. Otherwise, no meaning at all. I know Sir, that it is how convergent. 1 by n square? Okay, got it. Limit, we have to apply. We have to apply the procedure. Limit n tends to infinity, un by vn value, which is equals to limit n tends to infinity. Un value is n to the power of 3 minus 5n square plus 7 divided by n to the power of 5 plus 4n power 4 minus n, and the second fraction will become reverse. Directly I want to write like this, n square by 1. Will you accept it, this one? Yes, sir. Limit n tends to infinity. We maximum try to reduce some steps to approach our answer. That is also accepted in our exam. Look at that. From this one, can we take n power 3 common? Yes. N power 3 common means we are one left off. Minus 5. By n. Very good. Plus 7 by N. n cube. Correct? Okay. Yes, n cube. Taking common means we are dividing with the term. n power 5. Highest term को common लेना है. 1 plus 4 by n minus 1 by n power 4. Is it okay? Okay, Into, yes. into n square. Look at that. N power 3, n power 2 is n power 5. Cancelling with this n power 5, then we apply the limit. Apply limit. We get our answer is 1, which is not 0, and moreover it is finite. So how we got 1? ये पूरे 0 हो जाते ना जी. 5 by n 0, 7 by n cube 0. Denominator में जहाँ भी n है. Previous example देखो. What do you mean by जी, this? बट सर यहाँ पर बाहर तो डिनोमिनेटर में n होता, राइट? 1 by देन n. इधर साइड नहीं करें ना. कैन आई मार्क इट आउट प्लीज? हाँ, yes, sure. सर ये यहाँ वाला n और ये वाला n, what happens to that? Cancel ना. This n power 3, n power 5 cancel ना. N power 3, n power 2, n power 5 and n power 5 More cancel. one n will be there, right? ये तो 0 हो जाएगा ना. 4 by n 0. Okay. 5 by n 0. Okay. 7 by n cube 0. 1 by n power 4 0. Only 1 is the answer. Got it? Okay, got it, sir. Got it. Yes. That's it. Bye. First we'll cancel it like this, right? I'll show you 1 minute. Yes. First we'll cancel it like this. This, then this and this, right? Yes. Okay, got it, sir. By limit comparison test, write down the statement summation un and summation vn behave same. But summation vn is equals to, what is that vn value? 1 by n power 2. As you know, this one how to do it. In the previous problem also we did the same thing. That is p value Yes, is sir. 2. Of course it is greater than 1. So by p test, by preliminary test, we can say summation vn is convergent, which implies that summation un also convergent. It means this series will be finished. This problem is completed here. Got it? Got the idea? Yes, sir. Okay. Let me go for little complicated problem. Next page. And the question is, थोड़ा सा complicated हो जाएगा ये आपके लिए, but करना तो है ही. Third question. Test the convergence Okay, sir. of summation n is equals to 1 to infinity under the root of
n raised to the power of 4 plus 1 minus n raised to the power of 4 minus 1 and then bracket close. Let us start our work. Solution. आज की क्लास में आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पक्का पक्का आ जाना है. Okay, sir. मैं आपको फिर क्वेश्चन Sir, दूंगा later on, can you send me some questions also so that I can practice? आफ्टर Very important. ये क्लास के बाद मेरे को नमाज को जाना था. नमाज से आने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. ठीक है. Okay. Sir, very important and जो बहुत ज्यादा repeat हुए वैसे कोई questions. उसके लिए तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर फॉलो करना पड़ेगा. Okay, मैं I'll भी देता follow हूँ. that also, sir. मैं भी देता हूँ आपको बट आफ्टर नमाज के बाद ही करेंगे. Okay. नाउ लुक एट दैट. Okay, sir. Like previous questions, can we choose Vn easily? My question is, can we choose Vn easily? यहाँ से अपन Vn को आसानी से चूज कर सकते क्या? नहीं कर सकते. Because why? नहीं कर The सकते. reason is it is There is no not a denominator. proper fraction. ये proper fraction नहीं होता है. Understand? जी. इसको proper fraction में convert करेंगे तो कैसा? We have to rationalize the numerator. N power 4 plus 1 minus root n power 4 minus 1 divided by 1 multiply by its rationalizing factor is n power 4 plus 1 no change, but this minus sign will convert it to plus root n power 4 minus N 1 power 4 minus 1 divided by same story here n power 4 plus 1 plus root plus of n power 4 minus 1. That changing means, from improper to proper. yes, a minus b into a plus b formula. Have you remember that? Yes, sir. It's assume it is a minus b. This is a plus b. What's the answer of this? A A square square minus means B square. a square means root n square cancel na. A square means Yes. this N only power 4 plus 1 minus minus. N power 4 minus 1 Excellent. By by root of root N n power 4 plus 1 plus root root of, of N power 4 minus 1. exactly. After simplifying this one, if you multiply with minus sign, n power 4 plus 1 minus n power 4 minus into minus plus 1 by root of n power 4 plus 1 plus root of n power 4 minus 1. This one with this cancel. What is our un value? 1 plus 1 is 2 by. ओके. आफ्टर दिस यहाँ पर अच्छे से देखिए आप, ये रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग n पावर 4 कॉमन. वी आर लेफ्ट विथ 1 plus 1 by n पावर 4. करेक्ट. Yes, 1 plus. करेक्ट ना. Okay. जो भी काम Yes, कर sir. रहे हैं रूट के अंदर कर. यहाँ पर भी Okay, n got पावर it. 4 कॉमन. N power 4, 1 minus 1 by N power 4. सो नाउ टेक इट दिस n पावर 4 यहाँ से और यहाँ से रूट के बाहर निकालिए. जी. जैसे ही उसको अपन रूट के बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा होता देखिए. n पावर 4 रूट के अंदर है मतलब पावर 1/2 है. रूट के बाहर अगर निकालेंगे जी. ये हो जाता है n स्क्वायर. तो इट विल बी n square will be coming out from here and moreover from here. So what's left? So I ये didn't इसमें से get निकल this गया. step. ये रूट में अब क्या बच गया, 1 plus 1 by Sir, n ये power. step नहीं आया. Okay, okay, I'll explain, no problem, one more time. Look at ये n power 4 यहाँ पर है ना रूट के अंदर. जी. n power 4 रूट के अंदर है. Okay, जी. plus 1 by n power 4 is there. So let me split Yes. the roots. रूट को स्प्लिट करेंगे, इसको भी अप्लाई करेंगे n So power it 4 will be N power. यहाँ Okay, पर भी got अप्लाई it, करेंगे. got it. बट हियर द मीनिंग ऑफ फिर रूट इज N व्हाट. power 2 हो जाएगा. हाँ तो ये ऐसा हो जाएगा n पावर 2. ये दोनों में से भी बाहर निकल के आया. राइट. Okay, so तो ये the root आधा will रूट, be inside the bracket. हाँ इसमें का रूट 1 उसमें plus ही एज 1 इट by इज रह N जाएगा power 4 प्लस. plus 1 by N minus root. ओके ना. Yes. Yes, sir. नाउ वी कैन चूज अवर वैल्यू दैट इज Vn. हाईएस्ट पावर ऑफ एन न्यूमरेटर वी डोंट हैव मींस 1. डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर n स्क्वायर होता, क्योंकि इसका अगर पावर आप ऊपर लेके गए n पावर नेगेटिव होता. n पावर नेगेटिव 4 और n पावर पॉजिटिव 2 में n पावर पॉजिटिव 2 हाईएस्ट टर्म होता. जी. So next step we can move on. Limit.
n tends to infinity un by vn value, which is equals to limit n tends to infinity. This is 2 by n square into root of 1 plus 1 by n power 4 plus root of 1 minus 1 by n power 4 multiplied by second fraction will become reverse n square by 1. ये कुछ भी नहीं है. This n square cancel. Apply the limit. Look at that. If you apply the limit, what happened? यहाँ पर 2 बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 by n power 4 0 हो गया, ये भी 1 by n power 4 0 हो गया. Root 1 plus root 1 is 1, that is 2 by 2, which is equal to 1, which is not 0, and moreover it is finite. Clear? Yes, sir. Now write the statement and finish the problem. So statement is by limit comparison test, summation un and summation vn behave same. Behave Yes. same. But summation vn is equals to 1 by n to the power of 2 can be compared with 1 by n power p. P value is 2, that is greater than 1. So by p test, अच्छा ये मत समझो सबको इतना वर्क कॉमन आता बोल के, जी. तो 1 by n स्क्वायर नहीं आता, ये कोइंसिडेंट है कि सबको 1 by n स्क्वायर यहाँ पर आ रहा. By p test summation vn convergent, this implies summation un also convergent. अभी जो क्वेश्चन अपन करें n पावर 4 का था, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है. वो क्या है देखिए, समेशन रूट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है n स्क्वायर प्लस 1, ओके, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, ये आपको करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज समेशन रूट ऑफ सिमिलर प्रोसीजर. ओके, मैं अब सबसे टफ वाला आपको मैं कर दिया, 4 वाला, अब आपको सिंपल वाला दे रहा हूँ. ओके सर. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप करिए और अभी आपको मैं पीडीएफ भी, ये भी पीडीएफ सेंड करता हूँ और भी क्वेश्चंस रिलेटेड सेंड करता हूँ. और आई होप मे भी हो सकता है आपको आज शाम में भी एक ऑनलाइन क्लास हो सकती है 9 o'clock से. रेडी रहिए आप. हाँ, ओके सर, श्योर. शाम में 9 o'clock को फिर एक क्लास हो सकती है आपकी M1 सेम टॉपिक. ओके सर. राइट, कैसा भी आपने कंप्लीट करना है ना, दो सेशन को भी करना पड़ेगा, एक ही में नहीं होता. नॉट आई इनफ. एम रेडी फॉर दैट. ओके, सो लेट अस स्टॉप नाउ. राइट, ओके. यस. जज़ाकल्लाह खैर सर. नो प्रॉब्लम.